हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन। स्टेटमेंट वन से that the magnetic field at the ends of a very long current carrying solenoid is half of that at the center। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि if the solenoid is sufficiently long the field within it is uniform। राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid, right? Now let's say that this is our solenoid and this point P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट्स से कि ये एंगल है थीटा वन and this angle is theta 2. So the magnetic field at P will be mu naught Ni by 2 into sine of theta 1 plus sine of theta 2, where n is the number of turns, total number of turns, and I is the current carried on the solenoid, right? So इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इस सोलिनॉइड का एंड में जैसे कि एक पॉइंट P एंड में और एक पॉइंट Q जो कि सेंटर में है, राइट? सो B at P, that is the magnetic field at the end, will be mu naught Ni by 2 साइन ऑफ थीटा वन। तो इस केस में थीटा वन कितना होगा? वो होगा 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा टू इस केस में होगा 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री that is equals to mu naught Ni by 2, because this is 0 and this is 1, right? So B at P is mu naught Ni by 2. Now B at Q, that is the magnetic field at the center of the solenoid, is equals to mu naught Ni by 2 into sine of 90 डिग्री, that is the theta 1, right? क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में हम ये सोच सकते हैं कि जो एंड है वो इनफाइनाइट में है, तो द एंगल विल बी दिस एंगल विल बी 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा टू, तो थीटा टू भी सिमिलरली 90 डिग्री होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ magnetic field at Q. So easily you can see here that B at P is half of B at Q. So our statement 1 is true. That is, the magnetic field at the end of a very long current carrying solenoid is half of that the center. Now statement 2 says that if the solenoid is sufficiently long, the field within its uniform. तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले केस में जैसे हम सोचे कि हमें गिवन था कि the solenoid is long, that's why you take that this angle is 90 degree, because we have thought that the end is this end is at infinity, so the angle with the vertical will be 90 degree, and so that we get this value. B at the center is mu naught Ni, which is uniform, right? And this is only in case of a very long solenoid. So our statement 2 is correct, that if a solenoid is sufficiently long, the field within its uniform. So option B will be correct, that both statements are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Because statement 2 क्या कह रहा है कि if the solenoid is long, then the field within is uniform. But इस दूसरा स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट? सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Hope you understand the question. Best of luck.